Hello my fellow crafties, कैसे हैं आप लोग? So today's video we are going to be making some beautiful summer bracelets and I'll show you that in a minute. मैं अपने सारे beads जो भी आज बनाने वाले हूँ वो सारे आपको लेआउट करके I will show you. But आज का थीम यही है, summer bracelets, minimal bracelets, very cute, using some flower charms and some crystal beads, transparent crystal beads. So let's get into craft mode. सो दिस इज़ माई फर्स्ट बॉक्स. इस बॉक्स में कुछ क्रिस्टल बीड्स हैं और मेरा ये ब्रेसलेट मेकिंग नीडल है. तो इस आई एम गोना यूज़ दिस क्रिस्टल बीड्स इन टुडेज ब्रेसलेट मेकिंग. तो इस बॉक्स को साइड पे रख लेते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट बॉक्स. इसमें कुछ ये फ्लावर बीड्स हैं. ये मैं कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए इसको स्ट्रिंग करके रखा था. लेट्स कट इट आउट. तो ये जो फ्लावर बीड्स हैं इसमें सेंटर में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स है, लाइक लाइट पिंक, येलो, डार्क पिंक, ब्लू. तो इन फ्लावर बीड्स को मेक द सेंटर पीस ऑफ द ब्रेसलेट और उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे. तो आई एम जस्ट टेकिंग आउट ऑल द कलर्ड फ्लावर बीड्स ऑन अ ट्रे. We will be using this. Next up we have in this box some bunny beads. ये भी बहुत क्यूट लगते हैं. These are also looking very cute. अलग अलग कलर के बनी बीड्स हैं. सॉरी, थोड़ा कैमरा से फोकस ही हो रहा है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैंने निकाल लिया अपना ब्रेसलेट मेकिंग ट्रे. एंड जब भी मैं ऐसे ब्रेसलेट बनाती हूँ तो जस्ट बिकॉज वो साइज़ का इशू नहीं हो, उसके लिए मैं हमेशा उसमें और डिज़ाइन का इशू नहीं हो, तो आई मेक श्योर कि मैं अपने बीड्स पहले ही उसमें लेआउट दे देती हूँ. I make the design on the tray and then I start threading it in the elastic wire, because that gives, like, I don't have to think and thread at the same time. So मैं कुछ golden spacer beads भी use कर रही हूँ. To separate these flowers I'm gonna use 3 of each color in single bracelet. Now here comes the crystal beads. अब we are gonna make the equal, मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे जब भी कोई सेंटर पीस देती हूँ तो उसके दोनों तरफ में आई मेक श्योर कि इक्वल नंबर ऑफ बीड्स हो. तो क्रिस्टल बीड्स के बीच में आई एम गोना पुट दैट बनी बीड. तो इसलिए आई ऑलवेज काउंट माई बीड्स एंड देन आई मेक इट complete. Now let's tie up everything, and I'm gonna hide the knot under one of the flower, and see, this is the complete piece. How cute this looks, how beautiful this turned out to be. ऐसे ही मैं सारे कलर के फ्लावर्स का सेट बना लूँगी. So now I'm just gonna stop talking and we will talk to you at the end of the video. Enjoy.
So this dark pink one is the final piece for today's video. इसके बाद I'll show you all the pieces. So see here all the pieces and look how beautiful this all looks. Each one of them has their own uniqueness in color, and they are very pretty, very easy on eyes. So summer may it will be a very good vibe, these colors. So here are all the colors. Let me know which one is your favorite, and if you recreate any of this design, don't forget to tag me. My YouTube channel is scrafty8060. I'll give the link on the screen. Don't forget to subscribe and give a thumbs up if you like this video. Happy crafting. #BD Bunch. See you in the next tutorial.